constituency. I am in the favor of grading system because in marking system, if students get the less marks, so they will suicide and they will be hopeless. They have no another option for doing something in their life. That's why I am in the favor of grading From system. Bareilly constituency. Madam, the grading system is superior to marking system as it provides more comprehensive and clear assessment of the student's performance. Grades such as A, B and C offer a clear indication of a student's assessment and understanding and mastery of a subject rather than a single numerical mark. This system encourages students to focus on learning and achieving a high score. Honorable Speaker Ma'am, I am Sneha and my constituency is Mathura. I am in the favor of grading system because grades help communicate a student's achievement to student, parents and others. और मैं गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षा ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है और इसे चिंता को कम करने के लिए पेश किया गया था और बोर्ड एग्जाम्स में ग्रेडिंग सिस्टम को मार्किंग सिस्टम से बेहतर माना जाता है। चौहान फ्रॉम नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। I am in the favor of grading system as this system is very much beneficial for the students. अपने प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। यह प्रणाली छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। मेरा नाम रिया आरडी और मैं नोएडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों की फीडबैक प्रोवाइड करता है जिसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों को उनके आधिकारिक रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कराता है। ग्रेडिंग सिस्टम में छात्रों उच्च अंक प्राप्त करने पर दबाव आ जाता है उसे कम कराता है। स्पीकर मैडम, मैं अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो भूमि हाँ। स्पीकर मैडम, ग्रेडिंग सिस्टम नवी ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਭਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Mirzapur constituency. I am in the favor of grading system because in grading system the student is getting C plus grade, so they are seeing that even they have the plus sign which encourages them to work hard in their study. I am Ansh Rajput from Sitapur constituency. I am here to support my government for passing the bill on grading system. As our educational minister told to us, I think all the parents think that their children are getting stressed during the board examination. Myself Chirag Goyal from Nagina constituency. I am the favoring of grading system because grading system reduce the laser focused pressure from students. By focusing on grades instead of percentage marks, the negative mental health effect leads to the fear of failure and the anxiety of achieving perfect sources might be reduced. Myself Rudravir and I am from Chandpur constituency. I am in the favor of this bill because grading system in education has some integrated features that help students, teachers and parents build uniformity and advanced educational Good ground. afternoon, Honorable Speaker Ma'am. I am Aksh from Najibabad constituency. The grading system can motivate the student to perform better as it gives a concrete goal to strive for. Goa constituency. I am in favor of this bill because grading system provide a more balanced view of the students' academic performance by considering a variety of factors such as class performance, projects. I am Mohammad Tala and my constituency is Srinagar. I am in favor of this system to address a significant and transformative change in our education system. The introduction of grades in board examination is a very beneficial change. विषयात पास करायला पाहिजे का सांगत ती पोरग कुठं पण कसं पण येतं त्या घरात त्यासनी काय वाटत असलं तर आपण ग्रेडिंग सिस्टमनं पास करायला पाहिजे. धन्यवाद. From Lucknow constituency. Marking scheme is the best because it has developed our country till now. There is no need to change this system. Marking scheme encourages the student and helps them to set their goals. On the other hand, grading scheme demotivates the student. If the student should know that they will score
for passing grades in every situation, then why they will study? I am Aditi Chauhan from Muradabad constituency. I am in a favor of marking system. Marking system is better than grading system because grading system reduces the learning motivation of the children. They start focusing on achieving a good grade rather than understanding the concept. If a student is achieving 100 out of 80 marks, it is good rather than achieving A grade with the long-term numerical values. And it also helps to identify their weakness and their strength and where we have to do the improvement, and also help the student to give the entrance examinations and clear the university examination on the basis of marking system. And lastly, I want to say that marking system is better than grading system. Thank you. From Panipat constituency. As they always say about the grades, that grades are more beneficial for students instead of marks. But I think no. When students see their marks in their result, they exactly know where they stand. They exactly know where they need to work hard. I am Zara Azim from Haridwar constituency. In the world of knowledge, marks are true measure of achievement. Today I want to tell about crucial aspect of our education system, the method of evaluation. I simply believe that marking system is superior. The system provides precise and objective measures of a student performance. I am Anika Singh from Delhi constituency. I think introducing grading system is not a good step for our education system because if a student gets marks, then they are going to know how many efforts they have made. But if they get a grade, so how they are going to know how many mistakes they have made in the exam? अनुष्का बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरा यह सवाल है कि आप लोगों ने कहा कि 10वीं 12वीं के लिए ग्रेड चाहिए, लेकिन 10वीं 12वीं के लिए मार्किंग सिस्टम एकदम सही है। आप लोगों ने सबने मार्किंग देनी है, वो भी ग्रेड में, लेकिन मार्किंग सिस्टम में निष्पक्ष रूप से मार्किंग हो सके और एक बालक को यूँ भी पता चलेगा कि वो कहाँ खड़ा। आप एक ही मानस की पटरी में सब न घाल सकते। और लास्ट में तो बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे बड़े क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, अतीनों छाया न मिले फल लागे अति दूर। प्रिया सैनी है और मैं जलंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों में कंपटीशन की भावना नहीं पैदा करती है। छात्र दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वह आलसी हो जाते हैं। छात्र ग्रेड पाने के लिए विषय वस्तु को नहीं समझते थे। नमस्कार, माननीय स्पीकर मॅडम, मी कोल्हापूर संघटातली श्रेया घाडगे आहे. मार्किंग सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम पेक्षा अति चांगलं आहे का तर हे आपल्याला पोरांचे अगर मार्क कमी आले तर हे सांगतात की किती आले ती पोरं ती मार्क कमी असल्यामुळे जास्त प्रयत्न करतात मोर्चावर चांगल्या निकालासाठी. ग्रेडिंग सिस्टम पोरं हे बघतात की आमचे चांगले ग्रेड आलेत, ए आले, बी आले, सी आले. पोरासने असं वाटते आम्ही चांगल्या अभ्यासात म्हणून ते प्रयत्न करत नाही ते आणि अभ्यासात जास्त लक्ष देत नाही ते. शेवटला मी हेच म्हणणार, सुखी समृद्धीचा जोरा शिक्षण हाच मार्ग खरा, शिक्षण हाच मार्ग खरा. धन्यवाद. I am Jigyanshu from Manipur constituency. I oppose this bill as non-focused students tend to avoid both smart and hard work. No identification for weak areas due to grading system. Children tend to perform less. They know that they will achieve the targeted grade by making less efforts. Grading system demotivates the student to perform higher because they stand equal to those students. They stand equal to those students making less efforts. As grading system has divided the marks among different tasks such as assignment, presentation, and in the final exam they become less active. At last, I want to say that grades can signal the end of learning process. Thank you. Speaker ma'am, I am Abdul Aziz from Meerut constituency and I strongly oppose the grading system as it only provides the overall performance and marking system provides the accurate result. This system helps the student to learn throughout the year, not just during the exam. It can help a student to work hard and improve them. One and all present over here. Honorable Speaker ma'am, Gatha Singh here, leader of opposition from Ambedi constituency. So I do believe that marking system is better than grading system because good marks undoubtedly open the doors to the opportunities of scholarship. तो थारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे स्वरोजगार के अफसर ने पहले से ही कई योजनाएं बना रखी हैं, जैसे कि भारत में है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना और स्टार्टअप। इन जैसी योजनाओं से लोग अपना खुद का व्यापार कर सके हैं और दूसरे छोरी छोरे ने भी रोजगार दे सके हैं। यूँ तो बदलाव नियति की रीत है क्योंकि तलवारा की धारा पर इतिहास हमारा पलटा है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 10 साल पूरे आपकी सरकार ने काम करा,
कितनी एम्प्लॉयमेंट दी और कितनों की इनकम बढ़ाई? इसका जवाब है आप EPFO पे चेक कर लीजिए, आपकी सरकार से डबल किया है हमने। आपकी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, हमारी सरकार ने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। I just want to ask a question from the education minister, as they have said that the students get to know their overall performance in the grading system. So how they get to know where they have done the mistake and where they have to improve their mistakes? We don't want that the students can fail in the exam. We just want that the student must pass in the exam of board examination. And we are not saying that they can't just know their mistakes about the where have they done this. But we are just wanting that the students must pass and the opportunities will create with them. And the schemes are already we have launched for increasing the employment. कोई बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वयं रोजगार करेगा तो वो और कितने को रोजगार देगा? मैं अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले अपने देश की और अपने भविष्य की बात कर रहा हूँ, अपने देश के बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे सांसदों ने जो भी कहा अपनी बात प्रस्तुत करे, उन सभी के लिए धन्यवाद। Now is the time for voting. How many people are favoring this system? Speaker ma'am, this is injustice. We don't want this. Maintain the decorum of the house. Be in your limit. 36 MPs are favoring the grading bill and 15 MPs are not favoring grading bill. So the bill has passed with the majority. Ruling party has won. Thank you.